good evening. I'm Dr. Deepika Chabra from Jagsonpal Pharmaceuticals Medical Division, and we welcome you all to this webinar today. Along with me is my teammate, Mr. Amit Saxena from the Digital Wing. We are thankful to the Indian Society of Colposcopy and Cervical Pathology for involving Jagsonpal Pharma Ltd in spreading public awareness for cervical cancer. Welcome to all the delegates and a very special welcome to all the esteemed faculty. Special thanks to Dr. Leela Digumarti. She's the President ISCCP. Honorary Secretary ISCCP Dr. Pinaka Vamsi. And the conveners for today's programs, Dr. Ragini Agarwal. She's Chairperson, Humanitarian and Public Awareness Committee of ISCCP, and Dr. Anita Sabharwal, who is the immediate past Chairperson, Humanitarian and Public Awareness Committee of ISCCP. So we now invite Dr. Ragini Agarwal to initiate the proceedings. Ma'am. Thank you, Deepika. Very good evening to all of you. आप सबका आज के प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। ISCP कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर के लिए कैंसर सर्विक्स के ऊपर लगातार कई सालों से काम कर रही है, जो कि जिन लोगों ने यहाँ पब्लिक से ज्वाइन किया है उनको ये एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉल्पोस्कोपी एंड साइटोपैथोलॉजी टोटली कार्सिनोमा सर्विक्स के एलिमिनेशन के लिए काम कर रही है। और कार्सिनोमा सर्विक्स एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, जो मोस्टली जैसे आप आज कोविड के कारण सबको ये समझ में आ चुका है कि वायरल इन्फेक्शन होता है और उसको दूर भी किया जा सकता है। कैंसर सर्विक्स भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। बहुत थोड़े से ही कैंसर सर्विक्स लेस देन 5% किसी और कारण से होते हैं। तो इस आज का जो प्रोग्राम है पब्लिक अवेयरनेस का, इसको इसीलिए रखा गया है कि लोग इस बीमारी से बच सकें और एक कैंसर मुक्त सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ सकें। प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू टेक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर लीला दुग्मती को, जो कि ISCP की नेशनल प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने अपनी लाइफ पूरी की पूरी मेडिकल लाइफ कैंसर सर्विक्स के एलिमिनेशन में लगा रखी है। शी इज अ ट्रेन्ड कॉल्पोस्कोपिक ट्रेनर और बहुत लोगों को उन्होंने इसके बारे में पढ़ाया है। Over to you, Madam Leela. Thank you very much, Dr. Ragini Agarwal, for the introduction. Good evening, esteemed faculty and the delegates who have joined virtually. Thank you very much for taking your time out and joining this public webinar on conquering carcinoma cervix. So as a president of ISCCP, I thought it's a wonderful opportunity to meet a lot of doctors who are working in this field, as well as creating awareness to public on conquering the cervix, carcinoma cervix. The main aim of start doing this program is tomorrow, the 17th November, we are celebrating the 2nd anniversary of WHO Global Call for Elimination of Carcinoma Cervix. So as a part of this, from ISCCP, we have planned. And when I asked our public awareness team headed by Dr. Ragini Agarwal, without any hesitation, she has agreed to do this program. My sincere thanks to her and her team, and also to Dr. Deepika Chabra, who has nicely chalked out the program. So without wasting time, let us go through the program and enjoy from the speakers what they're going to advise us to eliminate CA cervix. Thank you once again. Thank you, madam. Thank you for your kind word and encouragement. मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वामसी को, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, to introduce our learned guest of honor, Dr. Satyanarayan. Dr. Pinaka, please. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. So I wanted to tell you all the forum that this cancer, one woman dies of this cervical cancer every 2 minutes. And this is the time we need to prevent it and to learn better from whom
we have our esteemed guest, Dr. Shankar Narayan, sir, who has a pan international presence and who has done enough work in early prevention of cervical cancer. He has done his initial training in India, followed by training in all over the world, and he was the special advisor on cancer control, head of cancer early detection and prevention section at WHO. In recognition of his services and his travel all over the world in getting this things done, he has been awarded many prestigious awards from all the countries all over the world. I welcome you, sir, as to be the guest of honor for this session. Good evening, sir. Thank you very much, Dr. Vamsi, for your kind words. It gives me immense pleasure to be among colleagues. And Dr. Leela Digamarti is quite active in holding the flag of the ISCCP. And this is very, very fitting that she along with all the colleagues and faculty has planned a very good awareness program, because basically awareness is the most critical element in any disease control. Cervix cancer is no exception. And it is very important for us to disseminate all the information that we have, the evidence that we have that cervix cancer can be prevented very effectively, and it can be treated, early stages can be treated very successfully. This message needs to permeate in the community. We are in exciting times where the World Health Organization is called for elimination, and the Indian vaccine is around the corner. I think we have one of the largest capacities for producing vaccine, like 200 million doses in 2 years, which will be remarkable. I think we are going to have a very wonderful tool with us very soon. And all your efforts are very critical, because we want to reach coverage. I think the efforts by each and every individual practitioner, the professional associations and voluntary bodies, very critical, because we are a large country. And whatever everybody can do can add to the total effort that we have. And just 3 messages, like, with HPV vaccination, one can prevent cervical cancer, no ifs and buts. And with screening, you can detect very early cancers and pre-cancers and treat them very effectively. And one can have a very good quality of life as compared to suffering from a very deadly disease. Thank you. Thank you, Dr. Satyanarayan, for your really giving the insight how to prevent the cancer cervix, and we can achieve our goal, which has given from the WHO and our Prime Minister Narendra Modi ji also, that we have to make a cancer mukt Bharat. Thank you so much for joining and giving your precious time. Thank you, ma'am. Moving forward, जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको बताना चाहती हूँ, कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसको कि आज हम वैक्सीन की मदद से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एक मंत्र है हम सभी डॉक्टरों का। और आज के समय में हम सभी इस हेल्थ अवेयरनेस में सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं कि वी वांट टू एम्पावर द वुमेन बाय द एजुकेशन। अगर माँ को इस बात की समझ होगी किस ढंग से किस बीमारी को रोका जा सकता है, वो आगे पूरे परिवार को, और परिवार ही मिलकर के एक सोसाइटी बनाता है, और सोसाइटी मिलकर के नेशन बनाती है, तो हम अच्छी तरह से आगे एक हेल्दी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अनीता सबरवाल को कि वो आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएं, और हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं, जो कि कैंसर सर्विक्स के प्रिवेंशन के मेन 6 हम पिलर्स कह सकते हैं, उनके ऊपर आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। डॉक्टर अनीता सबरवाल, ओवर टू यू। धन्यवाद डॉक्टर रागिनी अग्रवाल जी। आपने आज इतना बड़ा ये कार्यक्रम रखा है और हमारी बहुत सी पब्लिक हमारे साथ जुड़ी है, और ये सचमुच में ही एक ऐसा कैंसर है जिसको कि हम पूर्ण रूप से मोस्टली रोक सकते हैं, इसका बचाव कर सकते हैं, क्योंकि जीवन जो है हमारा बहुत ही प्रेशियस है। तो इस जीवन के लिए हम कहते हैं ना, जीवन है बहुत अनमोल, जिसमें स्वास्थ्य का है सबसे बड़ा रोल। तो आज हमारे ये 6 स्पीकर जो हैं अलग अलग देश के कोनों से आए हैं, और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो कि हमें कैंसर के बचाव के बारे में बताएंगे। सर्वाइकल कैंसर, जो कि आप सब जानते हैं कि सर्विक्स किसको कहते हैं,
ये जो हमारी गर्भाशय है या बच्चेदानी है या यूट्रस है, इसका नीचे का हिस्सा है, इसको ग्रीवा भी कहते हैं, और इसको बच्चेदानी का एक तरह से आप मुख समझ सकते हो कि इसका मुंह है। तो इस कैंसर को हम बड़े अच्छे से इजीली इसलिए बचा सकते हैं कि ये बहुत रूटीन चेकअप में ही हमें दिखाई दे देता है। तो इसके बहुत सारे आप इजी टेस्ट, जैसे आप कोविड में तो आप समझ ही रहे हो कि कोविड में कितना इजी था टेस्ट करना उस वायरस का, तो इस वायरस को भी, जो HPV वायरस है, इसको भी टेस्ट करना बहुत आसान है गायनी की डॉक्टरों द्वारा। सो अभी मैं सबसे पहले जो हमारी स्पीकर हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला अलग अलग कोनों से आई हैं, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, तो अभी हमारे साउथ से बेंगलोर से आई हैं डॉक्टर ज्योति GS, जो कि वहाँ रमैया मेडिकल कॉलेज में उच्च स्तर पे हैं, प्रोफेसर हैं और बहुत कार्य करती हैं इस कैंसर के ऊपर, और वो भी चाहती हैं कि इस कैंसर का बचाव हो। तो आज जितने भी हमारे लोग जुड़े हैं इनको ध्यान से सुने, ये हमें बताएंगे पैप्स टेस्ट क्या होता है, पैप्स में, जिससे कि हम इस कैंसर के शुरू के स्टेज में भी इसको पकड़ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर ज्योति जी, आप प्लीज गो ऑन विद योर लेक्चर, और बहुत मिक्सचर में हिंदी इंग्लिश में 5 मिनट में 5-6 मिनट के अंदर अंदर ही आप हमारे जितनी भी पब्लिक जुड़ी है उनको बताएं। थैंक यू। तो आप सबको एक साथ नहीं कर रही इंट्रोड्यूस? हाँ, अभी और भी स्पीकर हैं हमारे, सेकंड भी। अच्छा, मैं अभी इससे पहले कि डॉक्टर ज्योति आए, 1 सेकंड के लिए डॉक्टर ज्योति जी रुकिए, मैं हमारे बाकी 5 स्पीकर्स को भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। और हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर सरिता श्याम सुंदर, जो कि अभी ISCCP की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। बहुत कार्य हमने मिलके इनके साथ भी किया है, बहुत नॉलेज है इनको सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। ये अभी सफदरजंग में कार्यरत हैं, जो दिल्ली में है। इसके ये भी हमें इस कैंसर के बचाव के बारे में ही बताएंगी कि इस वायरस को कैसे चेकअप किया जाता है, जो कि HPV वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर करती है। नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारी डॉक्टर अचला बत्रा, ये भी दिल्ली से हैं, और फिलहाल ये सफदरजंग भी रही हैं और अभी माता गुजरी हॉस्पिटल में हैं, और बहुत सारा कार्य ये भी प्रिवेंशन में करती हैं। और ये हमें बताएंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सर्वाइकल कैंसर को बचाने की वैक्सीन है, जो कि हमें शुरू से बचपन में ही लगवा देनी चाहिए। और अब बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में आपको बताएंगी, आपने ध्यान से इन्हें सुनना है। और नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर भारती। डॉक्टर भारती अभ्यंकर, ये आती हैं कोल्हापुर से, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये भी करंटली बहुत कार्य कर रही हैं, बहुत सीनियर हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे, और इसी चीज से ये बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे ये इवन दूरबीन से भी कैंसर को चेकअप करती हैं और इसका प्रचार भी करती हैं और इसको सिखाती भी हैं। तो ये भी हमें अब इसके बारे में ही बताएंगी कि कैसे कॉल्पोस्कोपी से और किस तरह से हम इसका गर्भाशय का जांच कर सकते हैं, गर्भाशय के मुख का, ग्रीवा का। और नेक्स्ट हमारी हैं डॉक्टर अंजना सबरवाल, जो कि यूपी से, यानी कि गाजियाबाद, हमारी पड़ोस से ही हैं दिल्ली के, और ये भी बहुत सीनियर हमारी कंसल्टेंट हैं गाजियाबाद में, और हमारी इस संस्था की मेंबर भी हैं। और ये हमें बताएंगी कि कैसे इसको हम देख सकते हैं ग्रीवा को, और देखने के तुरंत बाद अगर हमें पता चलता है कि इसमें कुछ परेशानी है तो उसी समय इसका इलाज भी हो जाता है। तो हमारे लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है और इनको अभी ध्यान से सुनना है। और नेक्स्ट हमारी स्पीकर हैं जो कि इम्फाल से आती हैं, डॉक्टर हेलेन कामेइन, और ये वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर है एक बहुत बड़े अस्पताल में, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और ये भी बहुत सारे कार्यक्रम अभी भी कर रही हैं, बहुत सारे लोगों का सर्वाइकल कैंसर चेकअप भी करती हैं। और ये भी हमें बताएंगे कि अगर अब सपोजिंग हो भी गया तो भी आपको डरना नहीं है, शुरुआत में तो कैंसर पूरी तरह से इलाज भी पूरा हो जाता है। तो ये हमें इसके बारे में बताएंगे। तो अब आज हमारे बहुत अच्छे 6 स्पीकर हैं, आपने इनको बहुत ध्यान से सुनना है। 5-6 मिनट के अंदर वो आपको सब्सटेंस पूरा बताएंगे, तो इधर उधर ध्यान नहीं कीजिएगा, अपने मोबाइल सब ऑफ रखिएगा। और अब हम सुनते हैं सबसे पहले डॉक्टर ज्योति को। सो लेट्स हियर यू डॉक्टर ज्योति। Thank you, Dr. Anita, for your kind introduction. Let me start right away. I'll be speaking about PAP test. So what is PAP test? PAP test is the screening test done for cervical cancer, where the cells are collected from the cervix to detect abnormal cells. That is the changes, the precancerous changes which occur before the cancer occurs. So what is cervical cancer? Cervical cancer occurs in the cells of the cervix,
which is the lower part of the uterus that connects to the vagina. As told by all, it is caused by high-risk HPV virus, and the risk factors for this cancer is early sexual activity, multiple sexual partners, immunocompromised individuals, and presence of other sexually transmitted infections. So you can say, what is cervix? When you see this picture, you will know that it is the lowermost part of the uterus, that is the mouth of the uterus connecting to the vagina. Cervical cancer ranks second as the leading cause of cancer deaths in India, but the screening test, Pap test, is simple, effective, and can detect abnormal cells as early as 10 years prior to it becoming a cancer. So let us find out more. In view of all this, WHO has set a target for 2030 for elimination of cervical cancer, where 70% of the eligible women are screened and 90% of the women found with diseases, cervical diseases, should be treated. So look at the statistics. 1,23,000 women are diagnosed with cervical cancer every year in our country, and 77,000 and odd succumb to the disease. Around 3 crores of women will harbor cervical HPV 16-18 infection at a given time. And then every 8 minutes, a woman is dying. If I deduce the statistics, it is coming like that. And then 91% is a 5-year survival rate for early diagnosis, whereas it is only 16% when the cervical cancer is diagnosed late. This is the 5-year survival rate. What are the 5 reasons why you should never skip your Pap smear? Because it is the second most common cancer according to global statistics. Very easy to prevent. Unique cancer, you know what it is caused. It has a long precancerous course where you can detect the cancer cells by good screening test, and you have very good treatment for these precancerous lesions, and you can completely eradicate the disease. And the Pap test is done in the OPD. No special requirements is needed. Simple and minimally invasive, cost effective, cheaper than a pizza for sure, and covered by most insurance schemes. Early detection is the key. When detected early in the precancerous stage, early stage treatment is effective, and it has minimal effect on the quality of life. So when should you start screening? By 21 years, every 3 years till the age of 30. Thereafter, every 3 years, only if Pap test is done, or every 4 years if HPV DNA co-testing is done. Stop at the age of 65 if the last 10 years results are normal, or stop at the age of 75, even if the last 10 years are abnormal according to FIGO. So how to prepare for your test? Schedule your appointment on day 10 to 21, wear comfortable loose clothes, easy to dress and undress, avoid intercourse, douching of the vagina, spermicidal gels 1 to 2 days prior to appointment, urinate prior to the test, relax, take deep breaths. There's no need to be afraid. The calmer you are, the easier the whole process it. Oh, what equipments are used? This is a simple vaginal speculum which is inserted into the vagina to visualize the cervix. You have the AS spatula, the cytobrush, the slides, where from this spatula you take the smears from the cervix. The cells are smeared on the slide, and it is fixed to a cytofix. So that cytofix is there, and then it is sent to the histopathological examination. Okay, so the pathologist is seeing. So it is a very simple, the patient is made to lie down on the exam table, and then the speculum will be placed inside the vagina slowly, and then the blades of the speculum will open up inside the vagina so that the cervix can be seen. And then the brush is used to scrape the opening of the cervix to obtain a sample smeared on the slide, sent to the pathologist. And then what? The report will be ready within the next 4 to 7 days. Visit your doctor with the report. It could be normal. Even infections and reactive changes are considered normal. Continue the test as per the schedule. It could be abnormal. Various lesions are there, but it is not yet cervical cancer. Your gynaec can tell you to do further tests if it is abnormal and treat it before it becomes cervical cancer. Okay. So the frequently asked questions: do I need a Pap if I am a virgin? If you're above age of 21, it is recommended. You can choose to have a Pap test. You can discuss it with your gynaec doctor.
What if you have got a hysterectomy done? Yes, this can be stopped provided the hysterectomy was done for a benign lesion. If the pathologist has told it is pre-malignant or malignant, you need to do the walled smear. If you are HIV positive, you are immunosuppressed, you need to do it frequently, once in a year. If you have taken the HPV DNA vaccine, yes, you still need to do according to the same schedule as proposed. If you are in periods, it is better to avoid, because the abnormal cells may not be seen properly. So after the periods is done, you can do. If you are pregnant, it is not really a contraindication, but we generally avoid during pregnancy. But if in case you get it done, if it is abnormal precancerous lesions, you can plan the treatment after the pregnancy. Would it hurt? No, it is a painless test. There is slight discomfort and some amount of bleeding is not uncommon, but nothing to worry. If you can take something to reduce the pain, if your threshold for pain is very less, and ibuprofen before the procedure can help to reduce the pain. So cervical cancer can be prevented, but with our efforts, we can eradicate it. Let us join hands for a better tomorrow. Book your appointment with your doctor, gynec doctor as soon as possible. Thank you so much for your patient hearing. Together, let's heal the teal. Prevention is the key. Namaste. थैंक यू डॉक्टर ज्योति, बहुत अच्छे से आपने समझाया और मैं श्योर हूँ कि हमारे सभी जितने भी श्रोता हैं, जितनी पब्लिक है, उनको काफी ज्ञान मिला है। अब हम नेक्स्ट स्पीकर से सुनना चाहेंगे कि एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी टेस्ट कैसे किया जाता है, ये एक वायरस जो है इसको कैसे देखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी डॉक्टर सरिता श्याम सुंदर, आप प्लीज आइए और हमें बताइए कैसे टेस्ट करें सर्वाइकल कैंसर की जानकारी के लिए। डॉक्टर सरिता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कई साल से हमें पता है कि भाई सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जो बच्चेदानी का मुख का कैंसर है, वो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब बहुत जल्दी सेक्स शुरू करने से, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब बहुत सारे पार्टनर्स और से सेक्सुअल एक्टिविटी से इनका रिश्ता था। नेक्स्ट स्लाइड। पर हमें ये नहीं पता था कि है क्या कारण। जैसे है ये जर्मन वायरोलॉजिस्ट जो है, उनका नाम है हराल्ड जुर हाउसन, तो उन्होंने 30 साल इस पे काम किया। फिर ये पता लगाया कि भाई ये वायरस है, उसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। 16 और 18 ये 2 टाइप के वायरस उन्होंने संशोधन किया और उनको नोबेल प्राइज मिला 2008 में। नेक्स्ट। तो ये कैसे उन्होंने कीप गोइंग। सो ये कैसे उन्होंने पता लगाया कि HPV वायरस जो था, सारे जो सर्वाइकल कैंसर के जो स्पेसिमेंस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनसे इन्होंने दे टुक द बायोप्सी एंड दे फाउंड वायरस इन ईच, मतलब हर टाइप के बायोप्सी टिश्यू में उनको HPV वायरस मिला। सबसे ज्यादा HPV 16, उसके बाद HPV 18। नेक्स्ट स्लाइड। तो कैसे HPV कैंसर होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये वायरस जो अंदर घुसता है जब सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब जो में इंटरकोर्स के टाइम में ये वायरस अंदर आता है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। और ये जैसे लड़की सेक्सुअली एक्टिव होती है, जो अगर 18 साल, जो 19 साल, 20 साल जब भी सेक्सुअली एक्टिव होती है, तब ये वायरस बॉडी के अंदर आता है और ये कुछ साल रहता है और उसके बाद अपने आप ये वायरस कम हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन कम हो जाता है। बट अगर बार बार ये इन्फेक्शन हो, या फिर अगर इम्यूनिटी कम हो, जैसे हमें पता है जैसे कोविड इन्फेक्शन हुआ था, जैसे जिसको कोविड इम्यूनिटी अच्छी होती है वो कोविड या इवन जुकाम इतना जल्दी ठीक हो जाता है और थोड़ा सा जुकाम होता है। बट जिसकी इम्यूनिटी कम हो तो उसको ज्यादा कोविड हुआ था, जिसको वो ज्यादा फैल सकता है, जैसे खांसी वांसी होती है उनके। तो इसी तरह ये वायरस भी है, जिसको अच्छी इम्यूनिटी हो वो अच्छे से क्लियर कर लेता है, जिसकी इम्यूनिटी नहीं हो या फिर बार बार इन्फेक्शन हो तो उससे वो, या स्मोकिंग हो, या लो सोशल अदर दूसरे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, तो ये इन्फेक्शन रहता है और फिर वो कैंसर का कारण बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड।
तो जैसे कई लेडीज में इन्फेक्शन, एचपीवी इन्फेक्शन होता है और फिर जुकाम की तरह वो क्लियर भी हो जाता है, और अगर और कोई फैक्टर्स है तो फिर ये इन्फेक्शन रहता है और फिर कैंसर की तरफ बदलाव हो जाते हैं वो सेल्स के। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो एचपीवी करता कैसे है कैंसर, एचपीवी इन्फेक्शन से कैंसर बनता कैसे है? तो ये एचपीवी जो घुसता है अंदर, जो बिल्कुल नीचे तक वो सेल में जाके इसके बाहर, सेल के न्यूक्लियस के बाहर अब रहता है, और वो ये पिंक जो ऐसे गोला सा आपको दिख रहा है, और ये अगर इन्फेक्शन रहता है कुछ सालों तक तो फिर वो जाके न्यूक्लियस के अंदर, मतलब सेल के अंदर वो जुड़ जाता है और फिर वो कैंसर का कारण बन जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें ये पता किया है कि ये एचपीवी जो कैंसर के कारण बहुत, सिर्फ ये 16 18 नहीं है, सबसे ज्यादा तो 16 और 18 है, बट 15 टाइप के वायरसेस जो एचपीवी जो सर्वाइकल कैंसर का कारण है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बड़ा सा एक स्टडी हुई थी हमारे देश में ही, जो डॉक्टर शंकर नारायण सर है, तो उन्होंने ये बहुत बड़ी स्टडी करी थी कि उन्होंने ये पता लगाया था कि भाई ये एचपीवी टेस्ट जो होता है, अगर इससे हम स्क्रीनिंग करें तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होने के, मतलब उस ग्रुप में सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, कि उसका टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा है जो पकड़ने के लिए कि सर्वाइकल कैंसर किस में बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये देखा कि जो ग्रुप ने एचपीवी टेस्ट किया था उन ग्रुप में मतलब बहुत अच्छा उनका फायदा हुआ था कि सर्वाइकल कैंसर नहीं बना उस ग्रुप में। नेक्स्ट स्लाइड। और ये टेस्ट का कई सारा दुनिया विश्व में कई देश में ये मतलब ये यूज हो रहा है ये टेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड। और डब्ल्यूएचओ ने ये इसको गाइडलाइन में, जो पिछले साल ये डब्ल्यूएचओ की नई गाइडलाइन है, उन्होंने ये कहा कि हाँ ये टेस्ट एचपीवी टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सो करते कैसे हैं ये एचपीवी टेस्ट? ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपकी जो गर्भाशय का मुख है, सर्विक्स और जो का ओपनिंग है, वहां से थोड़े से सेल्स लेते हैं और ये मीडियम इसको जाके एचपीवी टेस्ट करते हैं, और ये ब्रश ऐसे इसमें इस पानी में डाल के और टेस्ट के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और इसके अलावा आप महिलाएं आप खुद अपना टेस्ट भी कर सकती है, जैसे कोरोना टेस्ट आप घर पे खुद टेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह ये सैंपल आप खुद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये बेसिकली आप प्लेट के एक छोटा सा एक सैंपलर होता है वो जैसे आपके योनि का रास्ता है वहां पे डाल के और ये बॉटल में आप भेज दें और ये टेस्ट लैब और ये एचपीवी के लिए चेक किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो हाई रिस्क एचपीवी डीएनए टेस्ट अगर होता है, अगर नेगेटिव है, मतलब 5 साल के लिए आप निश्चिंत रहिएगा, आपको जरूर ये कैसे कहते हैं हम, मुझे 5 साल तक सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। सो दैट इज अ वेरी गुड, अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सरिता, आपने बहुत ही सरल ढंग से बता दिया कि सर्वाइकल कैंसर की स्थिति जानने के लिए हम बड़े इजी ढंग से इसकी वायरस का भी जांच कर सकते हैं, और अब तो और भी आसान हो जाएगा जब महिलाएं इसको अपने आप से भी टेस्ट कर लेंगी तो उनका डर भी दूर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्पीकर पे जाते हैं जो कि हमें बताएंगी कि जो सर्वाइकल कैंसर की स्थिति है या जो हमारी ग्रीवा की जो स्थिति है वो किस प्रकार, इवन थोड़ा सा सिरका डाल के, विनेगर जिसको एस्टिक एसिड भी कहते हैं, तो उसके द्वारा या आयोडीन डाल के भी हम वो स्थिति जान सकते हैं अपनी आंखों द्वारा ही, और या फिर हमें कभी दूरबीन से भी जांच करना है तो उसके बारे में भी वो बताएंगी, जो कि सब बहुत आसान तरीके हैं। आप सिंपली जाते हो और 5, 10, 15 मिनट में टेस्ट करा के बाहर आ जाते हो और बहुत सारी आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। तो मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर भारती अभ्यंकर जो कि महाराष्ट्र से हैं, हमें इसके बारे में बताएंगी। मैम प्लीज बताइए। Thank you so much. Can I share my screen? Yeah. Okay. अभी आप सबको मेरा प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी
फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं बताऊंगी जो जो टेस्ट मैं करने वाली हूँ। ये टेस्ट जो है अभी अंग्रेजी में इसके नाम लिखे हैं, लेकिन ये टेस्ट बहुत सी आसान है। एक मैं बताना चाहूंगी आपको कि सर्वाइकल कैंसर इज अ यूनिक डिसीज, बिकॉज हमारी बॉडी में ऐसा कोई कैंसर नहीं है जो होने के पहले हम उसका डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, वो हम कैंसर होने के पहले आपकी जांच करके आपको बता सकते हैं कि यू आर एट रिस्क, आपको रिस्क है या आपको रिस्क नहीं है। दूसरी बात ऐसी है, ये कैंसर प्रिवेंट किया जाता है। अभी जैसे अनीता मैडम ने बताया, रागिनी मैडम ने बताया कि हम सब लोग प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करने के लिए इसका वैक्सीन अवेलेबल है, तो कोई स्पीकर उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये डायग्नोज होने के पहले मैंने जैसे बताया आपको, वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है और आपको कैंसर होने से पूरा का पूरा बचाया जा सकता है। तो ये 3 चीजें हैं जो इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत सी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको छोटी छोटी टेस्ट। जैसे पहले आपको बताया था पैप्समियर टेस्ट रहता है, वो एक छोटा स्पेक्युलम अंदर डालते हैं और आपका थैली का मुंह जो रहता है, सर्विक्स बोलते हैं उसको, वो देखते हैं, वो पूरी तरह अच्छा तरह से देखते हैं, उसको क्लीन करते हैं। थैली का मुंह देखते हैं, सर्विक्स, उसको अगर कुछ एब्नॉर्मलिटी देखे तो हम नोटिस करते हैं और उसके बाद उसको एक सिंपल सा एसिटिक एसिड लगाते हैं। डरने की कोई बात नहीं, एसिड नाम सुन के ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड रहता है और सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा जलन जैसी महसूस होती है, उसके बाद वो पूरा नॉर्मल हो जाता है। और ये लगाने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी है क्या। अभी ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ एक व्हाइट एरिया दिखती है, ताकि ये जो पिंक एरिया है ये पूरी नॉर्मल है, लेकिन ये जो एरिया है ये थोड़ी सी एबनॉर्मल है। तो अभी इतने साल से देखने के बाद हम बता सकते हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसको आगे जाके क्या करना चाहिए। तो सेम वे हियर यहाँ भी आप देख सकते हैं एक एबनॉर्मल एरिया दिखती है, तो इसको हम बोलते हैं ये वाया पॉजिटिव टेस्ट है। तो वाया पॉजिटिव अगर आती है टेस्ट, तो उसको आगे जाके कॉल्पोस्कोपी बोल के एक टेस्ट रहता है, वो कर देते हैं। अभी ये वाया वगैरह जो टेस्ट है वो हमारे रूरल और ग्रामीण महिलाओं जो है वो हर बार शहर में जाके अपना जांच नहीं करवा सकते हैं। तो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गवर्नमेंट ने हमारे डॉक्टर लोगों को ट्रेन किया है, सिस्टर लोगों को ट्रेन किया है, वो ये सब काम वो भी कर देते हैं। अगर एसिटिक एसिड लगाने के बाद बिल्कुल चेंज नहीं है, आपका सर्विक्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम बोलते हैं कि ये निगेटिव है। वाया निगेटिव बोलते हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं रहती है। सपोज ये वाया टेस्ट मैंने बोला पहले, वैसे अगर वो पॉजिटिव आती है तो उसको हम एक ल्यूगल्स आयोडीन बोल के लिक्विड रहता है और वो लगाते हैं, और उसके बाद फिर से ये सर्विक्स को हम देखते हैं कि वो जो पहले वाली व्हाइट स्पॉट था उसके ऊपर कुछ चेंज हो गया है क्या नहीं हो गया है। अगर वो व्हाइट स्पॉट ये ऐसे ब्राउन नहीं होता है, वैसे के वैसे ही रह जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये टेस्ट रियली पॉजिटिव है, मतलब वो और को थोड़ा सा रिस्क है उसको आगे जाके और टेस्ट करने की जरूरत है। अभी इस पिक्चर में देखते हैं हम, यहाँ पे पूरा डार्क ब्राउन है और ये सब टिश्यू पूरी की पूरी नॉर्मल है, तो ये टेस्ट हम बोलेंगे कि ये रियली निगेटिव है। जैसा मैंने बोला पहले कि अगर वाया पॉजिटिव आता है, एक व्हाइट पैच दिखता है आपके सर्विक्स पे, तो हम डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि बेटर आप आगे जाके कॉल्पोस्कोपी नाम की टेस्ट रहती है, वेरी सिंपल टेस्ट है। ये लैप्रोस्कोपी जैसे उसको एनेस्थेसिया वगैरह देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, ये हम ओपीडी में ही कर लेते हैं। ये सीधा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है कॉल्पोस्कोप बोल के, और उसके पिक्चर्स जो रहते हैं वो हमें मॉनिटर पे बड़े होके दिखते हैं, मैग्नीफाई होके दिखते हैं, ताकि छोटा सा भी फॉल्ट अगर हो तो हम स्क्रीन पे देख के आपको बता सकते हैं कि भाई इसमें आगे जाके क्या करना चाहिए, बायोप्सी करनी चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये सब हम कॉल्पोस्कोपी के बाद बता सकते हैं।
अभी इस पिक्चर में थोड़े से इमेजेस है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये बड़ा वाला एक व्हाइट एरिया दिखता है। सो दिस इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल मैंने आपको ये दिखाया था, दिस इज नॉर्मल, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट दिस इज बिग व्हाइट पैच एंड दैट इज नॉट नॉर्मल। सो आगे जाके हम बोलेंगे आपको कि बहन जी आपको थोड़ा सा रिस्क है, आपके रिपोर्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आगे जाके हम डेफिनेटली कुछ तो इलाज करेंगे। और ये सब सुनने के बाद डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया आपको, ये प्री मैलिग्नेंट लीजन्स जो रहते हैं वो अच्छी तरह से लोकली हम ट्रीट करते हैं और आपको कैंसर होने से बचाते हैं। कैंसर एक बार हो गया तो ट्रीटमेंट तो है उसको, वो अलग बात है, लेकिन ये सर्वाइकल कैंसर जो है वो होने के पहले उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और ये काम, ये जो टेस्ट मैंने अभी बताया आपको, वाया, व्हीली और कोल्पोस्कोपी, इसकी वजह से आसान हो जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं लीला मैडम, अनीता मैडम, रागिनी मैडम, सबकी शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक आपने सुना है और पब्लिक को भी इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल रही है। मुझे एक चांस मिला, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि स्त्रियां कैसे अपनी जांच बहुत आसानी से, बिना तकलीफ के, बिना किसी एनेस्थीसिया के, बिना सुन किए गर्भाशय के मुख की जांच जाके करा सकती हैं। हंसते हंसते जाना है उनको ओपीडी में और हंसते हंसते वापस आना है, और बहुत सारी जांच हमें पता चल जाएगी। तो इसलिए किसी को भी डरना नहीं है। आज की इस जिस तरह का हमने वेबिनार किया है, इससे मेरे हिसाब से तो अवेयरनेस गई होगी पब्लिक को, और उनको अच्छे से ज्ञान मिला होगा कि कुछ डरना नहीं है, आपको जाके अपना चेकअप कराना है, जो सरलता से हो जाएगा। तो अभी मेरे पास हमारी नेक्स्ट जो स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर अंजना सभरवाल, मेरी बहन ही है, और ये बताएंगी हमें कि कैसे हम, जैसे एक पेशेंट क्लिनिक में जाएंगी तो ये उनको देखेंगी और देखने के साथ ही साथ इलाज भी कर देंगी। आपको कोई दाखिल हो, अगर सपोजिंग आपकी कोई लीजन आती है, लगता है कि ये कैंसर का पहले का प्री कैंसरस लीजन है, तो ये उसका इलाज भी तुरंत बताएंगे कि कैसे हो जाता है, और आप घर पूरा इलाज करके ही पहुंचेंगे, तो आपको आगे वैक्सीन कैंसर इसके नहीं बाद है अनीता? वैक्सीन वाला इसके बाद है क्या डॉक्टर अचला वाला? अच्छा, डॉक्टर अचला का रह गया। ओके वैक्सीन तो ओके, पहले होगा। तो पहले सॉरी। तो चलो डॉक्टर इसके बाद अंजना करा दो, कोई नहीं, से, इसके बाद हाँ, करा दो। डॉक्टर अंजना से पहले ये जो बताएंगी हमें सी एंड ट्रीट, पर उससे पहले हम प्रिवेंशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इस सर्वाइकल कैंसर के बचाव का, और ये वैक्सीन हमारी डॉक्टर अचला बत्रा, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताने वाली हैं, बहुत एक्सपीरियंस रखती हैं, और इसको अब आप प्लीज ध्यान से सुनिए। तो मैं डॉक्टर अचला बत्रा मैडम को पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें एचपीवी वैक्सीन के बारे में बताइए। थैंक यू अनीता। सबको नमस्कार। और मैं आपको बताने जा रही हूँ एक अच्छी न्यूज़, पहले बुरी और फिर अच्छी। तो आप सबने सुन ही लिया कि ये सब दूसरे नंबर का कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद दुनिया में, और कितने सारे केसेस होते हैं। और इंडिया में जैसे बताया कि 200 वुमेन मर जाती हैं, हर घंटे में 8 वुमेन मर जाती हैं। तो ये सब अगर है तो कैसे हम इसे प्रिवेंट करें? तो हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजीज है। एक मिनट, मेरा स्लाइड शो नहीं हुआ, नीचे से करो, हाँ बस हो गया। तो स्ट्रेटजीज क्या है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी प्रोमिस्कुअस, यानी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जल्दी नहीं होना चाहिए, थोड़ा जल्दी एज करने से ज्यादा होता है। कंडोम यूज करो, स्मोकिंग नहीं करो। और अच्छी न्यूज क्या है कि अब हमारे पास वैक्सीनेशन है। वैक्सीन क्या होती है आप सबको मालूम है, आप अपने बच्चों को सबको वैक्सीनेशन कराते हो बचपन में कि उनको बीमारियां ना हो, और ऐसी 26 बीमारियां हैं जिसको हम रोक सकते हैं। और एक अच्छी न्यूज अब ये है कि कैंसर, जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उसके लिए भी वैक्सीन हो सकती है, पर हमारे पास उसके लिए एक वैक्सीन है। और 90% ऑफ द कैंसर्स जो भी सर्विक्स के अलावा भी जो होते हैं, उनको भी इस वैक्सीन से रोका जा सकता है। ये अभी आप सबने सुना कि एक वायरस से होता है, और ना ही सर्वाइकल कैंसर, और कैंसर भी वेजाइना का या बाहर आपके वल्वा का, एनल, ओरोफेरिंजियल यानी मुंह और गले का, और आदमियों की पेनिस का कैंसर भी इसकी वजह से हो सकता है।
और कैसे ये होता है, स्किन टू स्किन या सेक्सुअल कांटेक्ट से। बट नॉर्मली इन्फेक्शन होने के बाद चला जाता है, पर अगर ये रह जाए तो ये कैंसर बन जाता है। टाइप भी आपको बताए गए हैं, उसमें से जो वैक्सीन हमारे पास, वैसे तो बहुत टाइप के हैं, 200 टाइप के हैं, उसमें से 40 तरह के कैंसर करते हैं। तो जो वॉट होते हैं हाथ पे, कई जगह मुंह पे हो जाते हैं, वो मोस्टली 6 और 11 से होते हैं। और जितने भी कैंसर होते हैं वो मोस्टली 16 और 18 से होते हैं। पर बाकी जो मैंने नंबर लिखे हैं 31, 33, 35, 30, ये सब नंबर भी कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा 16। तो वैक्सीन ये क्या है कि ये उस जो HPV वायरस है, जहां से उसने हमारे शरीर के किसी भी जगह पे चिपकना है, किसी भी मेम्ब्रेन पे या स्किन पे, उसको ब्लॉक कर देता है। ये एक ढाल है, पर ये ढाल है, ये तलवार नहीं है, ये हमें पता रखना है। ये सिर्फ रोक सकता है, ये उसको ठीक नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है इसके लिए, अगर आप वैक्सीनेशन करा लेंगे तो ये ढाल की तरह आपको HPV इन्फेक्शन से बचा लेगा। तो इसके लिए आजकल गाइडलाइंस हैं कि सबसे अच्छा है कि 9 से 14 वर्ष की लड़कियों, वैसे तो लड़के भी, पर लड़कियों को लगवा दें। अगर नहीं लगवा पाए हैं तो 15 से 26 तक भी लगाने से इम्यूनिटी आ जाती है, और 26 से 45 तक थोड़ी कम आती है, पर फिर भी आप लगवा सकते हैं। ऐसे तो कई लोग कहते हैं जब तक सेक्सुअली एक्टिव हो आप लगवाओ। तो कैसे लगवाना है, जिस दिन आपने लगवाया, अगर आप 9 से 14 साल में लगवा रहे हैं तो लगवाने के बाद आपको 6 महीने या 12 महीने में, देखिए मैंने एक क्रॉस लगाया है कि 6 महीने से पहले नहीं लगवाना। अगर आप गलती से भी 6 महीने से पहले लगवा बैठे हैं तो वो आपका बेकार हो जाएगा। और कहाँ लगना है, आप देख रहे हैं मसल में लग रहा है, जैसे सारे बच्चों को लगती हैं, उनको लगाते हैं ना थाई में, तो वहां भी लग सकता है और ये बाजू में भी लग सकता है। अगर आप 15 साल से बड़े बच्ची को लगवा रहे हैं, या किसी को ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसे स्टेरॉइड खाने पड़ रहे हैं, या उसको HIV है, तो उनको 3 डोज चाहिए होती है। तो 3 डोज क्या है, पहली डोज लगाएंगे, उसके 1 से 2 महीने बाद दूसरी डोज, और 6 महीने बाद तीसरी डोज। प्रेगनेंसी में इसको नहीं लगाना है, पर अगर आप दूध पिला रहे हैं तो आप इसको लगवा सकते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की बीमारी है, हल्का सा बुखार, खांसी, जुकाम, आप इसको लगवा सकते हैं। पर आपको बहुत ज्यादा बीमार है, तब आपका जीव भी है, तब नहीं लगाना। और कितने तरह की वैक्सीन है हमारे पास इंडिया में? 2 तरह की है। एक सिर्फ 16-18 के अगेंस्ट एक्टिव है, यानी कि कैंसर वाले HPV के, और जो दूसरी है गार्डेसिल 4, वो है जो वॉट करते हैं, जो आपके हाथ में या शारीरिक अंगों पे हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट भी। और इंडिया के बाहर 9 के अगेंस्ट, 9 तरह के HPV टाइप्स के अगेंस्ट, पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है और ये बहुत महंगी भी है। पर और अच्छी न्यूज क्या है कि ये वैक्सीन इसलिए नहीं लगती थी, इसलिए गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, क्योंकि हर एक वैक्सीन का कॉस्ट 2000-3000 था। अब हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन आ गई है, जो कि 4 तरह के HPV के अगेंस्ट है, और ये सिर्फ 200 से 400 के रुपए के बीच में इसका प्राइस होगा। और आई थिंक फरवरी-मार्च तक ये गवर्नमेंट के पास आ जाएगी और गवर्नमेंट इसको देना शुरू कर देगी। ये बहुत इफेक्टिव होती है वैक्सीन, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव तभी होगी जब सेक्सुअल एक्टिविटी, संभोग शुरू नहीं हुआ। इसीलिए 9 की उम्र में, 11-12 की उम्र में अगर आप अपनी बच्चियों को लगवा लेंगे तो वो उनका प्रोटेक्शन हो जाएगा कि उनको नहीं होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर जैसा पहले भी बताया गया कि ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको स्क्रीनिंग नहीं करानी, बिकॉज ये 2 के अगेंस्ट है, और 40 तरह के HPV, चाहे कम, पर वो कर सकते हैं कैंसर, इसलिए आपको जो पैप स्मीयर HPV वैसे ही कराना है। बॉयज, यस, उनको भी लगानी चाहिए, पर अभी हम लड़कियों को ही नहीं लगा पा रहे जिनके अंदर इतना ज्यादा सर्वाइकल कैंसर है, इसलिए हमारी कंट्री में हम बॉयज के लिए नहीं इसको अवेलेबल करा रहे। अदरवाइज जो अफोर्ड कर सकता है बॉयज को भी लगाए, सेम शेड्यूल रहेगा। और कई बार लोग कहेंगे अच्छा मैंने लगवाई, एक मेरी मिस हो गई, अब क्या करें, 6 महीने में नहीं लगवाई, 1 साल में नहीं, कोई बात नहीं, आपकी एक मिस होगी, आप दूसरी जब भी मौका मिले उसे लगाइए। एक लगा के मेरे को प्रेगनेंसी होगी, अब क्या करूं? प्रेगनेंसी में नहीं लगानी, पर प्रेगनेंसी के बाद जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, अगर मुझे एक बार कुछ ऐसा लीजन हो गया जो कि प्री कैंसरस था, अब मैं नहीं लगवाऊं क्या वैक्सीन? देखिए
वैक्सीन आपको प्री कैंसर लेशन एक तरह के वायरस से है, अगर आप लगाएंगे तो कुछ फायदा ही होगा। जब इतनी सस्ती अब मिलने वाली है 200 से 400 रुपए में, तो लगवाने में कोई हार्म नहीं है। अगर मेरे को चोट लगी, उसी दिन मुझे वैक्सीन लगनी है, टेटनस लगाना है, वैक्सीन लगा लूं, यस, दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, सेम जगह नहीं। और अब आ गई अगर 9 वाली, तो मैं क्या दोबारा सारा कोर्स लगाऊं? नहीं। अगर आप एक बार फुली वैक्सीनेटेड है तो वो प्रोटेक्शन आपके लिए काफी है, आपको दोबारा वो नहीं लगानी है। तो हम क्या चाहते हैं, जो कि WHO ने भी कहा है कि हम अपने देश की 90% लड़कियों को 15 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन लगा दें। इससे हम अपने कंट्री को कैंसर फ्री करने में बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग और ट्रीटिंग जिसको है वो भी बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जो इस ताले की चाबी है, जो ताला हमारे में लगा हुआ है सर्वाइकल कैंसर का, HPV वैक्सीन, ये उस ताले की चाबी है। और चीजें भी, ये वैसा वाला होता है ना, लॉकर में 2-3 चाबियां लगानी होती है, ये सबसे बड़ी चाबी है, और फिर दूसरी चाबियां भी लगाओ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर अचला, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई और ये वैक्सीन की इतनी खुशखबरी दे दी कि अब हमारे देश में मेड इन इंडिया वाली वैक्सीन भी आ गई है। और अब वैक्सीन तो कौन नहीं पहचानेगा हमारे देश में। कोविड के टाइम में सभी लोगों को समझ आ गई है कि कोविड की वैक्सीन आई तभी हम सब बचे, तो वैक्सीन तो लगवानी ही लगवानी है। और पर इसमें ये है कि जैसे ही 9 साल की उम्र हो तो अपनी बेटियों के पहले बर्थडे पे ही आप 9 इयर्स का बर्थडे ऐसे ही मनाना है कि आपने वैक्सीन शुरू कर देनी है। बट ये भी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि वैक्सीन से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है प्रिवेंशन पे। पर उसके बाद जब लड़कियां या वुमेन, हमारी स्त्रियां सेक्सुअली एक्टिव हैं, उसके बाद उनको स्क्रीनिंग करानी भी जरूरी होगी, जो कि हमारे अभी जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि पैप स्मीयर कराना है या सिरके वाली जांच करानी है, ये सब करा के या दूरबीन से जांच करानी है, वो भी अवश्य है। तो अब हम नेक्स्ट में फिर चलते हैं, जो हमारा ये टॉपिक डॉक्टर अंजना सब्रवाल बताएंगी कि अगर सपोजिंग हमने बचाव कर लिया, बचाव भी हो गया, स्क्रीनिंग भी होगी, कुछ नहीं, पर कुछ लोगों को जैसे वो आए हैं और उनका कुछ लीजन्स भी हैं, कि वो ऐसा लीजन है कि वो अभी कैंसर के फॉर्म में तो नहीं है पूर्ण रूप में, पर अगर अभी उसका इलाज कर दिया जाए तो पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा, नहीं तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। तो ऐसे में कैसे किया जाता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अंजना सब्रवाल से, वो हम सबको बताएं। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं आज बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। मुझे नीला मैम ने, ISCCP ने, अनीता मैम ने, रागिनी मैम ने अपॉर्चुनिटी दी टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट पब्लिक फोरम, and that too against such a big problem, and that is CS cervix. So friends, मेरे पहले सब स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से ड्वेल किया ऑन पॉइंट्स कि कैसे हमें इस लड़ाई से जूझना है और कैसे हमें इसको स्क्रीन करना है। Now, just to tell you few good points about CS cervix again, मैं enumerate करने लगी हूँ कि cervix एक बहुत easily accessible organ है। सिर्फ एक speculum से हमें इसके बारे में पता चल जाता है, और कैंसर जो है वो बहुत लंबा टाइम लेता है डेवलप होने के लिए। इससे पहले बहुत प्री कैंसरस कंडीशंस होती हैं, अगर वो पकड़ी जाए तो आप कभी भी कैंसर में लैंड नहीं करोगे। और अभी नहीं, यही नहीं, हमें ये पता चल चुका है कि इसका इटियोलॉजी, इसका कॉज जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, और इसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन भी है। एंड प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ वी कैन प्रिवेंट इट एंड प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम दिस कैटास्ट्रोफी बाय अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। हमारी कंट्री में CS सर्विक्स की थोड़ी डिसमल सिचुएशन चल रही है। वी फाइंड कि हर 8 मिनट में एक वुमेन इससे मर जाती है। देखा गया है कि CS सर्विक्स से 3 times डेथ होती है compared to deaths in the mothers who have pregnancy और चाइल्ड बर्थ। तो नंबर ना बहुत ह्यूज होता है। पार्टली ये इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, हमारी कंट्री बहुत लार्ज है, और 85% हमारी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। उसको पुअर अवेयरनेस है इसके डिजीज के बारे में, और एज ए रिजल्ट कभी भी वो पूरी तरह उसकी कंप्लीट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराते ही नहीं है, और सारे लोग अपनी गुड रिसोर्स सेटिंग, अच्छे क्लिनिक्स तक पहुंच ही नहीं पाते। देखा गया है कि जब स्क्रीनिंग भी की गई है तो भी बैरियर रहा है।
कोई सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। एंड कॉज इसलिए था क्योंकि द स्क्रीन पॉजिटिव फीमेल्स दे नेवर केम बैक फॉर फॉलो अप टू कंप्लीट द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। In order to overcome this particular problem, तो नंबर ऑफ विजिट्स जो एक फीमेल को ये अपने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए करनी पड़ती हैं उसको डिक्रीज किया गया, उसको ये मिनिमाइज किया गया। और उसमें मिनिमाइज करने के बाद दो अप्रोचेस लगाई गई, जिसमें एक अप्रोच थी स्क्रीन एंड ट्रीट एंड दूसरी अप्रोच थी सी एंड ट्रीट। स्क्रीन एंड ट्रीट जहां पे हम पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में कैंप्स लगाते हैं, वहां पे पेशेंट्स को हम स्क्रीनिंग करते हैं बहुत ही सिंपल सरल टेस्ट से, जैसे कि सिरके वाली जांच जिसको वी कॉल एज विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। दूसरा यहाँ हम करते हैं पैप स्मीयर, जहां भी वो एबनॉर्मल वाया हमें नजर आता है और अगर हमें पूरा गर्भाशय का मुंह दिखाई दे रहा है तो उसी सिटिंग में ट्रीटमेंट भी दे दी जाती है। और वो ट्रीटमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एब्लेशन। एब्लेशन दो तरीकों से होती है, या तो हम ठंडी सिकाई करते हैं जिसको हम क्रायोथेरेपी कहते हैं, और या हम थर्मोकोएगुलेशन यानी कि एक गर्म सिकाई करते हैं। ये सिर्फ कुछ मिनटों का प्रोसीजर होता है, इसमें कोई भी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं होती। आप वहां पे एज ए ओपीडी पेशेंट जाते हो, वहां पे आपको स्क्रीन किया जाता है। अगर आपके टेस्ट में कुछ परेशानी नजर आती है तो तुरंत आपको ट्रीटमेंट दे दी जाती है। उसी समय अगर जरूरत हो तो बायोप्सी भी ले ली जाती है, लेकिन उसके बारे में फिर आपको बाद में अवगत कराया जाता है कि उसका क्या रिजल्ट है, लेकिन उससे पहले आपको ट्रीट कर दिया जाता है। दिस इज स्क्रीन एंड ट्रीट। अब दूसरी अप्रोच ये है, वो है सी एंड ट्रीट। अब सी एंड ट्रीट में क्या है कि एक विजिट में जहां आपको ये पता चला कि आपका या तो वाया मतलब सिरके वाली जांच से आपका सर्विक्स में कुछ खराब एरियाज नोटिस किए गए, या ये पता चला गया कि भाई जो तुमने एचपीवी की जांच कराई वो पॉजिटिव आई, या जिसमें ये पता चला कि आपने पैप स्मीयर कराया तो उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो एक सेकेंड विजिट ऐसे क्लिनिक में की जाती है जहां पे कि आप आए तो तुरंत आपको कॉल्पोस्कोपी करने वाले डॉक्टर मिले। कॉल्पोस्कोपी करने वाले डॉक्टर भी आपको यही सुविधा देंगे कि जिस समय वो कॉल्पोस्कोपी में आपको देखेंगे उसी समय वो अगर रिक्वायर्ड है तो आप वहां से वो बायोप्सी ले लेंगे, टुकड़े वाली जांच ले लेंगे, लेकिन उसी सिटिंग में वो आपको उस पर्टिकुलर लोकल लीजन की ट्रीटमेंट दे देंगे। वो चाहे एब्लेशन है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्रायोथेरेपी एंड दिस थिंग थर्मोकोएगुलेशन, और अगर उनको पूरी तरह बच्चेदानी का मुंह नहीं दिखाई दे रहा तो वो फिर वहां से काट के उसको, जिसको हम एक्सीजन प्रोसीजर कहते हैं, वो करेंगे। और बाद में लेटर ऑन वो आपको बुला सकते हैं कि भाई आप आके अपनी रिपोर्ट अपनी मर्जी से जब आ सकते हो, नहीं तो जब रिपोर्ट आती है तो वो कॉल करते हैं, फोन पे आपको बताते हैं और आप वहां आके रिपोर्ट के अनुसार आगे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बेसिक ये दो अप्रोचेस से जो फायदा देखा गया है वो है कि दिस इम्प्रूव्स द पेशेंट्स कंप्लायंस, this decreases the cost of treatment, and secondly causes considerably less emotional stress to the patient। तो इस हिसाब से, इसी बहाने से उनको बार बार आपको विजिट नहीं करना पड़ता, क्योंकि पेशेंट के लिए बार बार आके फॉलो अप करना मुश्किल है, पार्टली बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस, हस्बैंड बार बार नहीं अकम्पनी कर सकता, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस। तो अगर ये हम स्क्रीन एंड ट्रीट करते हैं तो एक ही डे में हम ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, और अगर हम सी एंड ट्रीट करते हैं तो सेकेंड विजिट में जब आप आते हो तो दोनों चीजें एक ही बारी हो जाता है, एक कॉल्पोस्कोपिक इवैल्यूएशन भी हो जाती है और इफ रिक्वायर्ड बायोप्सी एंड फर्दर ट्रीटमेंट हो जाती है। इस सारी चीज में मैं एक चीज कहूंगी कि जो मंत्रा है ऑफ कंट्रोलिंग एंड ट्रीटिंग सीएस सर्विक्स, वो आज भी वही है कि आपको एक तो टीम वर्क होना चाहिए। आप और हम दोनों ही टीम फॉर्म करते हैं, आप हमें अपना हाथ देंगे तो हम आपका हाथ लेके आपको इस परेशानी से उभारेंगे। तो एक तो ये होना चाहिए, दूसरा स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए और ट्रीटमेंट ऑफ प्री कैंसरस लीजन्स होनी चाहिए, ताकि कल को किसी भी मरीज को, किसी भी फीमेल को फुल फ्लेजेड कैंसर ना हो,
वो प्री कैंसरस यानी कि कैंसर से पहली वाली स्टेज से ही ट्रीटमेंट ले ले और कभी भी कैंसर की शिकायत नहीं। हमें को बोलना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर अंजना। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बहुत लोगों की शंकाएं क्लियर कर दी, और अब मुझे लगता है कि जितनी हमारी पब्लिक है उनको समझ आ गया है कि हमें इस कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, इससे बचाव की जरूरत है। और उस बचाव के लिए कहते हैं ना कि जो मंजिलों को चाहने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को चाहने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो हमारी ये जो पब्लिक है, ये जो हमारा सर्वाइकल कैंसर रूपी समुंदर है, इसका पुल ये इस तरह से कि प्रिकॉशंस लेके कि असुरक्षित यौन संबंध ना रखें, कॉन्डम यूज करें, सिगरेट स्मोकिंग ना करें, जल्दी से अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो, जल्दी गर्भ धारण ना अधिक करें। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर अचला ने बताया कि वैक्सीन लगवाएं, 9 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगवानी शुरू कर दें। और उसके बाद जैसे हमारे बहुत सारे विशेषज्ञों ने बताया, डॉक्टर ज्योति ने बताया पैप्स में का चेकअप कराएं। हमारी महाराष्ट्र से आई डॉक्टर ने बताया कि हमें वाया विलाई और सिरका रूपी चेकअप, जैसे कि अभी डॉक्टर अंजना भी बता रही थी, या दूरबीन की चेकअप, इन सबको करा के और अगर जरूरत पड़े तो स्क्रीन एंड ट्रीट का टेस्ट हो जाएगा। और इवन HPV का टेस्ट भी हमारे को डॉक्टर सरिता ने बताया कि आजकल तो अब वो लेडीज अपना घर बैठे भी टेस्ट कर पाएंगी। सो इतना सरल बना दिया है, और हमारी सरकार भी अब इतनी सस्ती लेके आ रही है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब ये कैंसर जो है, सर्वाइकल कैंसर, हमारे देश से जरूर भाग जाएगा। और डॉक्टर रागनी ने जो इतनी मेहनत करी है इस प्रोग्राम को बनाने में, डॉक्टर लीला की हेल्प करी है, और इतने सारे महानुभव हमारे जुड़े हैं, और डॉक्टर शंकरा नारायण तो कब से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जल्दी ही ये कैंसर हमारा भारत कैंसर मुक्त हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर से। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर रागनी मैडम को कि आप प्लीज डॉक्टर हेलन, पहले डॉक्टर हेलन को बुलाओ ना, जो इम्फाल से आई हैं। आज डॉक्टर रागनी, मैं बहुत गलतियां कर रही हूँ कि डॉक्टर हेलन जो कि इम्फाल से आई हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। उन्होंने हमें ये, हम प्रिवेंशन में लग गए ना, एक्चुअली सोचने लगे कि अब कैंसर तो प्रिवेंशन ही हो गई। आज इतनी अच्छी वैक्सीन सुन के, इतना कुछ प्रिवेंटिव सारे चेकअप सुन के मुझे लगा अब कैंसर तो प्रिवेंट ही हो गया है। तो अब हमारी पर एक वो व्यथा भी होती है कि कभी कभी हमारा कैंसर आ चुका होता है जब ये सारी स्थितियां नहीं पूरी की जाती, जब हमने ना वैक्सीन लगवाई और ना हमने चेकअप्स करवाए, तो कैंसर आ गया। अब क्या करें? तो ये जो व्यथा है हमें अब डॉक्टर बताएंगी। सो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर हेलन टू प्लीज कम फॉरवर्ड और हमें इस व्यथा का भी निवारण बताइए, कैंसर होने के बाद क्या करें। Chief guest of honor Dr. Shankar Narayanan, eminent seniors and their dignitaries. Thank you so much for giving me this opportunity. Has been about how to prevent cervical cancer. We know that cervical cancer now is an easily preventable cancer, but once the diagnosis has been made, what can we do about it? What do we need to know? First of all, we need to know about the stage of the disease. थोड़ा वॉल्यूम हाई हो सकता है? Cervical cancer, stage 1. No ma'am, ये मैक्सिमम किया है। Disease, the tumor would have spread and reached the pelvic side wall or the wall of the hip bones. In stage 4 disease, the disease would have metastasized. That means it would have spread to other organs like bladder, rectum, abdominal organs, lungs, bones, etc. Well then, how do we treat the disease? Well, there are various treatment modalities that are available. We have surgery as a treatment option, radiation, chemotherapy, but it all depends on the stage of the disease. For treatment planning, the doctor needs to know the stage of the disease, but what we need to know here is that the final stage of the disease can usually be confirmed after surgery. But
So in order to do that, what the doctor does is that they might advise MRI or CT scan, which may help in guiding the treatment plan and how to proceed with the treatment of the disease. So if from imaging, the disease is perceived to be in early stage, then it is usually treated with surgery. There are different types of surgeries available. As we know that in stage 1 disease, that since the cancer is confined to the cervix, so simple removal of the cervix and the uterus may be done in those early stage disease where it is not visible by naked eye. But if it is a bigger tumor but still less than 4 centimeter, then radical hysterectomy is done, which entails removal of not only the uterus and cervix, but also the soft tissue around cervix and uterus, some part of vagina, ovaries, and fallopian tube. Based on the tumor size, fertility sparing is an option for women in reproductive age group who wants to preserve the fertility. There are various surgical options. We have conization, we have trachelectomy. Now, conization entails removal of a part of the cervix, whereas trachelectomy, the cervix is removed in its entirety. Both treatment are as effective as removal as hysterectomy, and added advantage is that the patient's fertility is preserved. The patient can bear children in the future. However, with bigger tumor, even in stage 1 disease, radiation is an alternative treatment option. Radiation is usually the treatment mode from stage 2 onwards. In stage 2, stage 3, stage 4 disease, treatment by radiotherapy is an option. There are various types of radiotherapy available. The external beam radiation therapy and brachytherapy are a part of the conventional radiation therapy, which is usually given to all, which is available widespread and given to patients. However, with advancement in treatment modalities, there are various types of radiation modalities also which have come up and which is associated with lesser side effects. However, this form of radiation therapy still remains the common mode of radiation therapy that we usually give to the patient. Chemotherapy usually is given along with radiotherapy as it has an added advantage of increasing the sensitivity of the cancer tissue to the radiation, hence enhancing the efficacy of radiotherapy. Chemotherapy is an option for patients in whom radiation or surgery is not a treatment option. For those cases in advanced stage where we want to improve the quality of life of the patient, chemotherapy is an option. Cervical cancer, if diagnosed early, is very effective, and if detected early and if treated, can easily cure the disease. The treatment response, the success rate, even in stage 2 onwards disease, is about 40 to 70. So what we need to know is that even though coping with cervical cancer is difficult, the treatment with its all side effects definitely has its own issues, but if promptly treated, detected early and promptly treated, the disease can be cured, especially for those which have been detected in early stage, and even those with advanced stage like stage 2 and stage 3. Radiation is a very effective mode of treatment that can help with the cure of the disease. With this, I will conclude my talk. Thank you so much for your patient hearing. I will welcome any questions. Thank you. Thank you, Dr. Helen. आपने अच्छा बताया कि इसका इलाज भी संभव है, पर सबसे पहले तो हमें बचाव ही करना है। पर अगर फिर भी अगर ये कैंसर हो भी जाता है, पर जितनी अर्ली स्टेज में ये कैंसर पकड़ा जाता है उतना ही अच्छा है कि उतना ही इसका इलाज सरल हो जाता है।
ऑपरेशन से भी होता है, और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है तो फिर ऑपरेशन नहीं, फिर सेकाई जिसको रेडियोथेरेपी कहते हैं, या फिर दवाइयाँ जो कीमोथेरेपी कहते हैं वो दी जाती है। पर जितनी जल्दी आप लोग इसको जांच करवाएंगे और ये पकड़ में आएगा, तो इवन अगर यंग एज वाले हैं तो उनकी बहुत अच्छा तरह से इलाज हो जाता है। इवन उनके वो गर्भधारण भी फिर वो कर सकती हैं अगर वो शुरू की स्टेज में आ जाती है। तो यही मैसेज है कि बचाव करना है, और अगर कुछ भी है तो स्क्रीनिंग कराते रहिए, ताकि पहले तो कैंसर बने ही ना, उसकी पहली स्टेज में ही पकड़ में आ जाए और पूरी तरह से इलाज हो जाए जड़ से। पर अगर हो भी जाए कैंसर तो आपको भी शीघ्र आइए, डरिए नहीं, क्योंकि हर तरह का जो भी जांच है या इंजेक्शन हैं उनमें इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो इसका बचाव बहुत जरूरी है। तो अब मैं डॉक्टर रागिनी अग्रवाल मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे का अपना बताएं कैसे जाना है हमें। थैंक यू अनीता फॉर कंडक्टिंग सो वेल, और सभी स्पीकर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से बचाया। हमारा देश गांव में रहता है, आज भी गांव की औरतों तक ये वेबिनार्स पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसको देखते हुए हरियाणा ओबीजीवाइन सोसाइटी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, आओ चलें एक कदम मुक्ति की ओर, ना समझी से ना छूटे जीवन की ये डोर। और इस मुक्ति प्रोग्राम के तहत हम कैंसर प्रिवेंशन पे, एसटीआई प्रिवेंशन पे और अनचाहे गर्भों पे गर्भ ना होने की लिए कंट्रासेप्शन अवेयरनेस पे काम करते हैं। हमारी को चेयरपर्सन ऑफ मुक्ति प्रोग्राम डॉक्टर अलका गुप्ता, जो कि बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए, वो यहाँ पर इस समय अमेरिका में 5 बज रहे हैं, लेकिन वो जुड़ी हुई हैं, और वो ये हमारा प्रोग्राम मुक्ति का हरियाणा में गांव में डोर टू डोर लेकर के जा रही हैं। ओवर टू यू डॉक्टर अलका, हमारा जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है उसके बारे में आप थोड़ा रोशनी डालें। थैंक यू डॉक्टर रागिनी। मैं अब गुड़गांव रहती हूँ, और गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द मुक्ति प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी हम लोगों ने 7 विलेजेस इनिशियली अडॉप्ट करे हैं। मांगर विलेज है, वहाँ पे आई सेट अप अ फ्री क्लिनिक 2 years बैक, लेकिन नाउ आई एम डूइंग सर्वाइकल स्क्रीनिंग वाया एंड विली। तो सबसे पहले वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स अमंग्स द गर्ल्स ऑफ द विलेजेस। ये वॉलंटियर्स हैं, ये लड़कियां हैं जो अपनी ग्रेजुएशन कर रही हैं, प्लस द आशा वर्कर्स ऑफ द विलेज। उनको बुलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं हम लोग की व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर, क्यों स्क्रीनिंग जरूरी है, क्यों आप अपनी विलेज के लेडीज को लेकर आइए हमारे तक। एंड दीज गर्ल्स आर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल जॉब। ये लेकर आती हैं, ये उनको दे ऑल्सो एक्सप्लेन टू देम कि पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाएगा, पीवी किया जाएगा, और practically 100% ladies are willing for this examination. We are happy to say that. जब ये villages, ये ladies आती हैं, हम लोग camps conduct करते हैं, where I am doing via Willy, and those who are negative, if they are having infections, हम लोगों को दवाइयाँ बहुत दे रहे हैं. We are finding so many infections, and I have my thermocoagulator also. I bought it. The WHO level, ये German model है, 2 kg का portable with a battery. जो बिल्कुल छोटे लीजन्स हैं हम उनको थर्मोकॉट्राइज भी कर रहे हैं, जो ज्यादा बड़े लीजन्स हैं उनमें हम लोग इनको रेफरल दे रहे हैं। आई एम हैप्पी टू से कि इन द लास्ट 100 पेशेंट्स 2 पेशेंट्स हैड बिग लीजन्स, दे वर रेफर्ड। एक सफदरजंग हॉस्पिटल गई, एक फरीदाबाद गई, दे गॉट देयर सर्जरीज डन। सो समवेयर दैट ड्रॉप इन द ओशन वी हैव प्रिवेंटेड व्हाट was CIN3 type of lesion, and we are going on for that prevention. We are getting very good response. हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने की, जिससे कि हम लोग इन कैंप्स को और वीकली कर सकें और बढ़ा सकें from other villages. So some people have come and now watched our camps, and हमें उम्मीद है, हम लोगों को इन लेडीज को गाड़ियों से लाना पड़ता है, फिर उनको थोड़ा रिफ्रेशमेंट देते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, उनको सब समझाते हैं, and then I am also doing some follow-up camps for the ladies I feel need another visit with me. So this is what we are doing. I'm very thankful to Dr. Ragini for making me, a part of this, and I hope something good comes out of it. हम लोग अपने villages increase करने वाले हैं very soon, and this is ईला जो अभी आप देख रहे थे, who runs a foundation, जिन्होंने हमें
ये जमीन, ये जगह दी है और यहाँ पे हमने पूरी क्लिनिक क्रिएट करके सारा कुछ हमारे पास बेसिक सामान है। आई एम के और 1 साल 1.5 साल में अगर मैं कॉल्पोस्कोप ला सकी यहाँ पे, पर फंड्स चाहिए होते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग वी आर यूजिंग सम पीपल हैव स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग, तो थोड़े थोड़े फंड्स हैं। दवाइयाँ हम 7-8 हजार रुपए की पर कैंप बांट देते हैं। वी आर ऑल्सो ट्रीटिंग ऑब्वियसली द एनीमियाज एंड the calcium deficiencies, lactating women को हम लोग we are giving vitamin D, calciums and all. So साथ साथ we are going to introduce a glucometer now in the camp. So this is the kind of work that we are carrying. Dr. Alka Gupta, Dr. Alka, as a president of ROPGN, I'm so proud of you. It's my dream to reach the villages and you have done it. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. Leela, for giving us this opportunity. And with the good note we are finishing it. अगर किसी को भी इससे थोड़ा भी फायदा पहुंचता है, और जिन भी डॉक्टरों ने यहाँ ज्वाइन किया है, हमारी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप 10 लोगों तक भी इस चीजों को पहुंचा सके तो हमारा ये आज का कार्यक्रम और आपका ये कीमती समय जिसके साथ आप यहाँ जुड़े हैं वो रियली सक्सेसफुल होगा। वो जिनके पास आप पहुंचाएंगे वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए, आपके नॉन डॉक्टर फ्रेंड्स होने चाहिए। और इसके साथ मैं इस प्रोग्राम को, पब्लिक फोरम को खत्म करते हुए अगला सेकंड प्रोग्राम फेलिसिटेशन के ऊपर जाते हैं और मैं डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी नायक को इनवाइट करूंगी इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए। दीपिका डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी वो दिखाएं। डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी जो है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रागिनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। और Hindi में बोलूं that I was really enthralled by hearing to all the speakers who have done such a wonderful job. Dr. Alka Gupta, Dr. Anjana Sabharwal, everyone. So I think we all are like little squirrels working for the elimination of cervical cancer. So thank you so much, Dr. Ragini, for taking this program to a very nicely organized program to very new heights. So now हम और एक क्षेत्र पे चलते हैं जहां हमारे साथ आज जुड़े हैं बहुत बड़े बड़े लोग, हस्तियां जो कुछ काम सर्वाइकल कैंसर के लिए किए हैं। सो पहले क्षेत्र में जो है वी हैव सम प्राइजेस टू बी अनाउंस्ड। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रेखा भारती। डॉक्टर रेखा, आर यू देयर? Yes, ma'am, I'm there. Okay. So request Dr. Rekha to take up the first part and then I'll follow. Welcome, Dr. Rekha. Thank you so much, Dr. Bhagyashri. So first we are going to announce the prizes for the write-ups. So I'm just going to introduce the judges which we had for the write-ups. There was this, competition which was there. We had invited for the write-ups and the posters on the advocacy to action for cervical cancer elimination. So we were supposed to announce the prizes. So I'm going to take up the prizes for the write-ups. So for this, the judges were Dr. Shalini, myself, and Dr. Sundari. Dr. Shalini could not join us because of her previous commitments. So I invite Dr. Sundari to please announce these prizes. And she is a senior consultant in MS Ramaiah Hospital. She had been a professor at Ramaiah Medical College, and her main area of interest are preventive oncology, high-risk pregnancy, and teaching. So Dr. Sundari, could you please come and announce the results? Yeah, thank you, Dr. Rekha Bharti. Yeah, we have gone through, we had about 6 write-ups we received. Among the 6 write-ups, I think all of us have judged, and then we selected 3 among that. Now, the first paper, which goes with the third prize, goes to Dr. Madhu Gupta, and she's from Hospital Beautiful Tomorrow Hospital. They have done really a good social work. They have created awareness, and 700 school children have been vaccinated by the first dose of the HPV vaccine. Really, we congratulate Dr. Madhu Gupta and her team. And then I think we hope that you will continue to do the work. And Doctor, congratulations from all of us. And she can be promoted. The prize. I think she's there, Dr. Madhu. Yes. Yeah. Congratulations, Doctor. You're doing a wonderful social work, and we will wish you to continue, and we wish you all the best for your work.
And then coming to Can we allow her to speak a few words? Yeah, please, Bhagya, yes. Thank you so much for considering us. And I don't know, this is a trust. I'm the director of the Navjeevan Nursing Home, and through this trust, we are doing this work on prevention of cervical cancer and breast cancer. It's a dream come true. I really don't know how to express it, but it was a Rotary International project, and they joined hands with us in cervical cancer vaccination, and funding was all there, and we executed it. Thank you so much for considering it. Thank you so much. Thank you very much. Now the second prize goes to a young Amrita Patil, a third-year postgraduate student from UCMS and GTB Hospital under the guidance of Dr. Amita Suneja. They have done work on Colposcopy, that's using the fluorescent sodium instead of acetic acid and comparing with an acetic acid, the sensitivity and specificity. And they found that the chromocolposcopy is much better than acetic acid. So it's a new window for us in a colposcopy work. I think we may need to do more studies on that, and then we'll see the usefulness of the chromocolposcopy. Because as we know, acetic acid, many a time we'll have a lot of confusions. Even metaplastic epithelium may take it to some confusions, but they've done a good original work. Congratulations, Dr. Amrita Patil and the guide Amita Suneja for receiving the second prize on this. Are they? Dr. Amita yes, Suneja they are also there? Yeah. Hello. Dr. Amita? Yes, Yes, madam. You would like to say something about it? Yeah, Yes, very good evening. And thank you very much for bestowing us the second prize. And actually, chromocolposcopy has come out to be very, very promising. And now we are trying to try it as a via. I've given my second thesis topic to the other student that we are doing it on via. Is it a better contrast agent than acetic acid for via? So maybe by next year we'll have the results. And it has shown really good results. And it is a fluorescent dye, gives a contrast. So whether ANMs can detect it from a distance. So that is my next project. Is the dye available freely? Fluorescent Yes, the dye, Dr. Amita, what is the dye you are using? Dye is fluorescent sodium. It comes as a crystal, and we pre-plate and chemical balance, the dilute in saline, then put it over the cervix. Okay. Yeah, it's a very non-toxic dye. It is not a drug, and no reactions have been observed. And it's a very good agent. I think there's a comment from Dr. Shankar. Dr. Shankar Narayan is commenting on that, Dr. Amita. Yeah. He said that it's a very, very good startup, and you please continue. It will be very useful. Dr. Shankar Narayan has given the comment. Okay. Okay. I think all of us must start and see how it will be. More and more studies, if we could do, probably, as you said, Anganwadi and Asha workers can do it if it is a dye and it is useful. Yeah, only thing is it has to be seen through blue filter. So now microscopes have blue filter, but we have also via invented UV torch, which has the same wavelength, gives the blue light. So now I'm putting it on via. Yes, madam. We would really look to see the results in next Hyderabad conference. Yeah, please, you can present it and you would give us more details about it. Dr. Thank you, Dr. Amita, for the nice, the sum up which you have given us. So now is the time to announce the also first Dr. winner. Amrita Patel is here. Yeah, Dr. Amrita is also there. Is there? Dr. Amrita? Yeah, she was there. You want to say a few words? Encourage the people. Yeah, Amrita. Amrita, you want to say something, ma'am? Yes, ma'am. I'm really thankful to my guide who gave me this new topic and I'm really thankful to her. Okay, thank you. You have done a good job. Keep up your interest in doing some research like this, okay? All the best for you, Dr. Amrita. Yeah, she has worked very hard. Thank you. Yeah, the first prize goes to Dr. Shruti Bhatia, and she is from Balaji Action Medical Institute. They have really done a wonderful cross-sectional study about the awareness among the staff members, paramedicals, and the cancer patients' relatives
regarding the cervical cancer, HPV vaccine, and what causes cervical cancer, and the screening methods. They have done a wonderful study, and then they have presented their results. It's a very interesting and a very practical study it is. So congratulations, Dr. Shruti and your team for doing a wonderful study and presenting the results. Thank you very much. Is she there, Deepika? Is she there? Dr. Shruti? No, ma'am, I can't see her. Okay, actually we had sent her a mail, probably she didn't see it. So thank you, Dr. Sundari, for just announcing the winners. And I must say all 6 write-ups were beautifully written and everybody had done a very good job. So we congratulate all 6 writers who sent us, authors who sent us their write-ups. And now I request Dr. Bhagyalakshmi to please carry on with the winners of the poster presentation. I thank you, Dr. Bhagya and Dr. Bhati, for giving me this opportunity to announce a pleasant job of announcing the results. Thank you. So now we have the pleasant duty to announce the poster prizes. So can I see those slides, please? Okay, so we have very, very eminent judges for this. Dr. Vijay Juchi, who is a senior consultant at an ex-professor at an unit head at Safdarjung Hospital. I think a very, very senior member of ISCCP. And next judge for the posters were Dr. Pinaka Vamsi, who is again the secretary of ISCCP and working at Homeva Cancer Hospital. And next, next slide, please. And next is Dr. Priya Ganesh Kumar, who is the sitting chairperson of the Foxy Oncology Committee and very, very dynamic. So I would request them to announce. I think with Dr. Vijay Jushi is the senior most, and I think I take the liberty and privilege of requesting ma'am to announce the prizes. Thank you, Bhagya. But you have to show me the prizes because that is the marks given by me, but there were 2 more judges. You must have compiled it. We got only 2 posters. Yeah. Yeah, Dr. Anshu, you know, because if you ask for a poster, it has to be very catchy. And the message was very clear in that, you know, the diagrammatic representation. So I think, and it was meant for actually the public. The other one was more of a study, which was, I think, too crowded. If you had a 3rd poster, I would have definitely liked to have a 3rd poster for that. Because anyway, we had only 2 posters. So one is first and second is second. Okay, is Dr. Anshu there? Anshu is from Jaipur, if I'm not mistaken. Is she joined us? No, I can't see her here. And Dr. Ela is from Gorakhpur. She's SR in the AIMS Gorakhpur. And she used to that's a good study. She should have sent it as a write-up. That would have probably So I got think we will request them to join us at the next ISCCP conference with more detailed workup on what they have done. Yeah. Okay. You can display that poster that Anshu has made. In fact, I liked it so much. I liked it so much that I thought I will take out the print and put it in my wherever I'm working. Just put it. It's so nicely made poster for a common lay people who can read Hindi. Yeah, Deepika, can we show the poster? No. Yeah. I do not have that, ma'am. Okay. So many congratulations and thank you, Vijay Joshi ma'am, for the needful. So we are going ahead in another segment of this program today, and that's still more interesting and more happening and more exciting thing. So amongst us we have real leaders and workers, and ISCCP is really privileged to felicitate these very doyens in their field who have tried their level best in their capacities to work for cervical cancer elimination. So let me share the screens first. So we are moving from 2020 to 2030. So I think we have lots and lots of responsibility to do, and we have giants like Dr. Shankar and all who are leading us in that path
and then we have to follow and then start working in that direction. And these are some of the leaders who have done this, and ISCCP is really, really privileged to felicitate them. So I think incredible things can be done simply if we are committed to making them happen. I think that's very, very obvious. So thank you very much for all the service done in this line of cervical cancer elimination. So we have chosen 9 stalwarts from different parts of India who have set their impact and put their footprints in the lines of cervical cancer elimination. So congratulations again to all the 9 stalwarts who have really helped in their field. So at the outset, we have with us Dr. Sophia Rodriguez, who is from Goa. She is a consultant obstetrician and gynecologist at Manipal Hospital, Donapola, Goa. She has a 15 years experience in the field of obstetrics and gynecology. Her work involves conducting gynec health camps and cervical cancer screening camps in rural, low privileged community, especially the unreached places in and around Goa, and conducting workshops also for nursing staff, healthcare workers, and RMOs. So we are really privileged to have with you Dr. Sophia today. And Dr. Leela, would you like to speak something? Yeah, congratulations, That has Dr. taken all Sophia. the pains to make a certificate which will be reaching you and a memento which will also be reaching you soon. So over to you, Dr. Leela. Yeah, congratulations, Dr. Sophia. It's very, we're really honored to honor you rather. And the aim of ISCCP is to bring doctors who are working in the cervical cancer elimination initiative to one forum and work more aggressively to reach our goal. So will you please share your experiences briefly for the audience who are here to know? Thank you so much, ma'am, for inviting me to such a prestigious platform. And we are all the way from Goa, and it's nice to see so many doctors putting in so much efforts from all over the country. So looking at you all have put my level at a different track. You know, you all have really encouraged me to come forward and work even more for this society. And thank you for giving me this prestigious platform and an award for the same. Thank you so much. Okay, thank you very much for accepting our invitation. And the next in line is Dr. Goter Doke. He is a senior consultant and assistant professor of OBG, Tomoriba Institute of Hospital and Medical Sciences, Nahralgaon, Arunachal Pradesh. He is a very active member of Itanagar Obstetrics and Gynec Society and as office bearer of this society, and he is a trainer for Via and Colposcopy, and currently he is a part of the FIGO HPV project. But I think we all have to remember that Arunachal Pradesh in the northeast has one of the highest number of cervical cancers, and Dr. Goter has been really, really instrumental and working very, very hard in that area in all possible capacities, in prevention, in training the other paramedical workers, training other medical officers. So we are really privileged to felicitate Dr. Goter. Occasion, we have a certificate for you and a memento which will be reaching you soon. Congratulations, Dr. Goter Doke. Are you there? Yes, ma'am. Yeah, very good. We hope that you would continue your work like this to reach the goal. So please share your experiences. Good evening, everyone. And, thank you very much to ISCCP organizer and especially my respected Dr. Bhagyalakshmi for giving me this chance. And first thing is, my first will be thanks a lot for recognizing my work. And the second thing is, I'm sad. Basically, I represent the state which is quoted as which is on Globocon also you can see, Globocon 2021, 21. My state ranks the highest, Papumpare district. Papumpare unit is the highest in the cancer service. Video open करायचा है. Hello. I think please mute. Yes. So,
Deepika, Yeah, can from we my part, mute Dr. Radhika? Yes. yeah, from my part, I'm contributing my whatever is possible to eradicate this cancer cervix with lots of limited support. But still, I have my own private personal colposcope and my own personal thermocoagulation, and I'm using that for all the hospital and other camps also, which I conduct. So trying basically with all limited facilities, but I'm load is a very long way, but hopefully I think maybe in some years down the line, maybe we'll bring down our incidents. Maybe I can see my state in lower rank. Unfortunately, right now we are the top gold medalist in cancer cervix rate. And thank you so much, everyone, for inviting me and feliciting me this award. Thank you. Thank you so much. Thank you, Porter, for being here. And I think he is actually has a very crucial position to work for. So thank you so much and continue your effort. So now we have another stalwart from the very, very northern part of India. I think India is a very, very diverse country and people are working in very, very difficult situations. So I think we are really obliged to them for having put in all their efforts, whatever is feasible in their circumstances. So she is a professor at the and former HOD of OBG GMC Srinagar. And she has a teaching experience of more than 40 years, has been the secretary of Srinagar Obstetrics and Gynec Society, was a counselor to IGNO, and she has been proactive in implementing preventing measures for carcinoma cervix, including pap smear, vaccination in and around Srinagar. And during the corona time also, she has done many virtual workshops in training the doctors around Srinagar. So I think we are happy and privileged to felicitate Dr. Nigat Firdos from the northernmost part of India. So thank you, Dr. Nigat, for accepting our felicitation. Congratulations, Dr. Nigat Firdos. So actually, it is a wonderful opportunity for me also to know the doctors who are working so hard in different parts of India. So the selection is, the credit goes to Dr. Bhagyalakshmi because she's bringing many doctors into main stream. So please share your experiences for us to know. Thank you so much. Can you hear me? Yeah. Yes, yes. Thank you so much. First of all, I'm thankful to you for giving me this opportunity. And secondly, I would not hesitate in saying that all the presentations were so crisp that really even a toddler would understand what it was being spoken of. So I have tried to work on this and you have appreciated it. So I'm really thankful. And for your information, I'm holding a camp with the MET University program with Miss Priyadarshini. I think it will be somewhere in the first week of December for cervical screening awareness. And because of bad weather, it could not be held in November, but we are intending to do it in first week of December. So I want your blessings for that. And I have more patients should come and the weather should be good so that we are able to conduct it. Once again, thank you very much for everything. Thank you, madam. Thank you so much for accepting. And ISCCP is really honored to felicitate you. And I expect you to continue that good work. God gives you all the courage and energy. Yes, thank you so much. Thank you so much. So we have next with us another stalwart, a very, very dynamic woman, Dr. Prabdeep Kaur, who has extended all her help and support for especially Tamil Nadu, who is a physician, public health professional, scientist F in the head of Division of Non-Communicable Diseases, course coordinator of the FETP NCD track fellowship at ICMR, has collaborated with Government of Tamil Nadu to design, evaluate India's first primary care-based cervical and breast cancer screening program in 2008 to 15, has been the technical support to the Government of Punjab
to implement India's first HPV vaccine pilot project from 2016 onwards, member of the WHO's Global Cervical Cancer Elimination Expert Group, and she has more than 75 publications in peer-reviewed journals and has really been a leader in the paths that have in the policy making paths of cervical cancer elimination for India. So thank you, Dr. Prabdeep. ISCCP is really honored to felicitate you in recognition of all your work. So, thank you so much for being here with us. Thank you very much. Yeah, congratulations, Dr. Prabdeep. Thank you, madam. Thank you very much. Please share your experiences. I know you've been doing a wonderful job with a lot of projects in your hand. Very well done work so far, and I hope you would continue also like this. Thank you, madam. I'm actually so happy to be part of this meeting, and it was a pleasant surprise for me. Because, you know, although I worked so much in cervical cancer, I have somehow never interacted with your group. And I think it was very nice of you to have brought us from periphery into your community, and hope to have more interaction going from, you know, to solve any big problem. We need many stakeholders to work together, and we need to bring everybody on the same page. And I'm very inspired by the work of Dr. Shankar Narayanan. I think he's here. I consider him as one of the mentors. And my work has been a lot on bringing cervical cancer screening into primary care, because which is the biggest challenge. So unless we take it down to the most peripheral level, women will not be able to access it. And it's really tough. I mean, many of you talked about the initiatives that you're doing as camps and so on. But we know that if we want to reach to large number of people, it has to come into the policy, it has to come into the government programs, and it has to be very easily accessible to women. And Tamil Nadu was the first state which took this step, and this is part of a multi-disease program. I also work on hypertension and diabetes. So as part of the multi-disease screening program, we did pilots from 2007 onwards. And then from 2011 onward, Tamil Nadu government was the first state to introduce a statewide program. And I closely worked with them in designing, evaluating. And we actually showed what works, what doesn't work, what the challenges are. I mean, it is great that more than 1,500 primary health centers in the state actually started doing screening. So that was a very big achievement. But although the coverage still remains low, and as you all know, women are not coming forward even if screening is available. So we have a long way to go. I'm so happy about this awareness program. But I think there are many challenges of why women are not wanting to undergo screening. So I think that's been my great learning, and I really hope we can do more on those lines. The second big learning from our field experience is that women don't find VIA very acceptable because they feel it's inconvenient, it's uncomfortable. They don't like those big forceps going in and the burning sensation. So these are things which matter. Like, we may think as a doctor it's good for them, but they hesitate to undergo. So I really hope that with the HPV DNA testing becoming more easily available, hopefully we can improve the screening. I want your society to advocate for that. At least in few states, if you can help with the pilots, it will really help. I know Sikkim is doing this. My colleague, Dr. Rupa, who's also part of this society, is working on that. The next big learning, I work closely with the government of Punjab on the first pilot on introducing HPV vaccine. There was so much fear around HPV vaccine. So the government didn't want to use it in the program. And we were able to convince them. We got all the stakeholders together and successfully did the pilot, which actually helped the approval of HPV vaccine in NTG. And very happy that based on the Punjab experience in Sikkim, now it's going to come into the program. And we really hope that, we all can continue to work together and save every woman from cervical cancer. There is no reason any woman should die from a cancer which is preventable and so easy to treat. And thank you so much. And I'm really motivated to keep doing the work that I'm already doing, and maybe work with all of you and make it into a much bigger sort of agenda for all the governments and stakeholders. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Prabdeep. And we wish to work with you more and more so that we can all walk together. Thank you so much. Thank you.
So I think now I give the stage to my younger brother, Dr. Bhamsi, to take the program forward. Dr. Bhamsi. Yeah, thank you, ma'am. Thank you for giving this opportunity to introduce heroes who are doing so much work in this field of prevention. Ma'am, I would request you to proceed the slides so that it would be easier. Yeah, so I would like to request introduce you all to Dr. Shweta Balani. She is from the heart of our country, from Delhi. So she has been doing this work for a long time. She's a senior consultant at Sant Paramanand Hospital and accredited colposcopist, previous secretary of the society, who has been very active in not only organizing various forums like this and also public awareness programs on cervical and breast cancer. So I congratulate you, ma'am, on this felicitation. Thank you, Dr. Leela and Dr. Vamsi, for recognizing and encouraging me. And it is a small society of our group, with the name of Friends of Sant Paramanand Hospital, who are a group of active people who are vaccinating, and they have vaccinated with more than 1,000 doses. And now they are just looking forward for a single dose course, which is coming forward. And every day they would call, when is the Indian vaccine coming? And when is the first dose, 1 dose regime coming? So looking forward for further vaccination and screening, which we are doing almost every year, going to the unreached and screening them. Thank you very much. Thank you. Congratulations, Dr. Shweta Balani. So you are the one who started your work with ISCCP and you are growing with ISCCP. That's what I would say. And I hope you will continue your work, not only your work, your association with ISCCP. Congratulations once again. Thank you for the recognition and encouragement. Thank you. So going on to now. Thank you, ma'am. So now I would like to introduce you to our next hero, Dr. Helen. Dr. Helen comes from very far from Imphal in Manipur. And she has been doing wonderful work even at the circumstances, since she works with the scarcity of resources and scarcity of things which we generally have for granted in the mainland. She is an associate professor in gynec-oncology in charge at Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences. She has been very active in the Northeast Forum and in the prevention of cervical cancer with interest in academic and research activities. I congratulate you, Dr. Helen. Vamsi, thank you so much. And I can't say enough, thank you, because my journey with screening actually started with a friend, a pathologist friend, who approached me to help her collect samples for screening of cervical cancer. But then I think the main catalyst, I can't deny, would be meeting Dr. Bhagyalakshmi Nayak and Dr. Leela Digumarte. Both of you, ma'am, you have been so instrumental, when we were traveling all those unreached areas. We were not thinking of how uncomfortable the journey was, but rather on how many women we can help out. And we did get few patients who tested positive. And we are very fortunate that those patients, despite the bad transport system, they did come to us, approach us for help. And we are very happy that we could help them. But these were like just a few percentage of the entire population, which we still need to cover. So I hope I'll have your continued best wishes, support, and guidance. And I'm really happy to be in this forum, because today I got so many great ideas on how to proceed, things that were a lot of hindrances for me. Lots of things were going on, and I'm getting lots of good ideas. And actually I had something planned for the Cervical Awareness Month in January. So I'm going to approach my institute director and maybe, help, include them in our plans as to how to go forward with further screening and reach more areas. Thank you so much, ma'am. Yeah, really, congratulations, Dr. Helen. Congratulations. And all our best wishes would be with you for doing your wonderful work.
Thank you, Dr. Helen, for highlighting the unsung heroes of our society who have been doing a lot of work behind. Thank you, Dr. Bhagyalakshmi and Dr. Leela, for carrying out. I can't give you felicitations, but I would like to thank you for that. So going on to our next thing, Dr. Bharti is from Indore, and she has been working very energetic in the middle of our India, and she has been a consultant gynecologist at Dysplasia Clinic Indore. She has been practicing preventive gynec oncology and have been running a colposcopy clinic to provide diagnostic and therapeutic services. Trained colposcopy trainer and has conducted various symposia. She has created awareness on genital cancers through public and through electronic media and press. She also has gone into making documentary films for public education, which is a very good mode of education. I congratulate ma'am on your work, and we congratulate on this felicitation. Thank you, ISCCP, Dr. Bhagyalakshmi, Dr. Leela, Dr. Vamsi, for recognizing my work. And I think the effort should continue. And that is the message, the effort should continue. Thank you so much. Congratulations, madam, Dr. Bharati, madam. I don't know whether you remember me or not. We were together in Lucknow for AOGIN conference. We were together for all workshops and everything. I hope you remember it, madam. Yes, yes. Thank you so much, Dr. Moving on. So I would like to introduce you to Dr. Radhika ma'am, who doesn't better know Radhika ma'am. She has been working in this field for quite a long time. She's an honorary consultant at Savitribai Phule Hospital. She's a trained clinical cytologist, very rare. She's a certified colposcopy trainer. She has conducted many cancer detection camps. She has written a very beautiful book on cervical cytology and colposcopy, which I have personally gone through it. And she has also developed an instrument and patented it. It is an endocervical and endocervical spatula for collection of sample for cervical cytology. Congratulations, ma'am. She hails from Kolhapur in Maharashtra. Thank you. Am I? Madam, voice is not clear, madam. Congratulations. Now, yes, madam. Yeah. Bhagyalakshmi madam, thank you very much for this felicitation and all of your team. You have not forgotten me in this big gap in between of lockdown and all these things. I work in Kolhapur and mainly in the rural part of India. And I was happy as a trainer to Foxy during all these years. And even today, I have started working in a small project in rural Kolhapur, Maharashtra, of course, on a cervical cancer project, because that is the only project which is near and dear to me. Thank you very much. Thank you, ma'am. Going forward our next hero, Dr. J.S. Malliga from Chennai. She's a well-known circle in the South. She's an associate professor of Divine and Preventive Oncology at Adyar Cancer Institute. She's an active member of EGOIN and EGOI societies. She has very special interest in cancer prevention and early detection. She's a principal investigator in numerous studies on HPV sampling techniques, detection prevalence, paving a local database for us. And she also has publications in peer-reviewed journals. Congratulations, ma'am. Yeah, congratulations, Dr. Malliga. Thank you, ma'am. It's like Dr. Pradeep said, it's a pleasant surprise and a great privilege. I understand after listening to the program, like the great work done by many people in difficult terrains like Arunachal Pradesh and Manipur is really inspiring. Thank you so much again. So what we are doing is we are trying to introduce HPV screening in the community, and we are trying to provide HPV as a point of care test, and we are training the health workers to do the same. And so far we have done nearly 75,000 tests.
in different districts. So what we are trying to achieve is we are trying to make it as a demonstration program and and bring in a policy change or a policy adaptation from the government. Like Dr. Pradeep said, a lot of work is going on. It's high time we adopt HPV DNA testing. And once again, I thank you all and thank Dr. Leela ma'am and Dr. Bhagyalakshmi ma'am for the privilege. Thank you so much, madam. Thank you, ma'am. So these were our heroes. I know there are a lot of other unsung heroes, but we would like to still work in this field and make it. So what I want to end with finally is that motivation is what gets you started. So we all got motivated today. We all heard this beautiful work done by this many people, but commitment is what keeps you moving. So let us commit for to this thing, and I end this felicitation session. I think we have come to the end of this wonderful program. Bhagya madam, are you here? Yes, madam. Yeah. So we have done everything in a very organized way, the way we wanted, and everybody has done a wonderful job. So now we can ask anything else, or shall we ask Dr. Vamsi to give vote of thanks? Yeah, I think it has been wonderfully done. So I think Dr. Ragini needs a special mention about this. Yes, madam. Yes, yes. Dr. Ragini, Dr. Anita Sabarwal, and actually Dr. Deepika from Jagsonpal. They've been really working very hard. I think in the last 2 weeks, the time we decided to do this. Yeah, they've been doing it a lot. So I think we go over to Dr. Pinaka for his final official vote of thanks. Before Dr. Pinaka says, I would just like to say a word. Dr. Leela ma'am, I had talked to you because see, we are having another program, again, continuing with your prevention of cervical cancer. On 18 December, I will attend. Yeah, so I would request everyone to attend and be part of it. Only then we all together can do at all levels. People from grassroots to the top. Virtual programs, we are almost now all on the same page. So we know each other, who is doing what work. So we have become so communicable with each other. I think this is again a very good start. Yes. Very, very comfortable we are, Dr. Bhagya. With you also, we worked so much during your tenure in Foxy. Yeah, it was wonderful. Tomorrow Foxy is also doing a huge program. Yes, yeah. to 6:30 with all the stalwarts. I think we should not. That's again with the public awareness committee, which I'm also very much part of it. So this is what I'm saying. Same committee we are doing on 18th of December. So please do join us. Okay. Thank you so much. Okay. So over to Dr. Pinaka. Yeah, thank you, ma'am. So I would like to take this opportunity to thank the organizing team for wonderfully bringing on this program, Dr. Ragini and her colleagues. Then I would like to thank the organizing sponsors, Dr. Deepika, for making it a flawless presentation with good coordination among all the members. I would like to thank the speakers for bringing out such very simple presentations to all of us. I would like to thank our guest of honor, Dr. Shankanaran sir, for accepting our invitation and presiding over the session. I would like to thank all the attendees, medical, non-medical, who stood throughout the 1.5 hour session and got motivated. And this is what this programs we all try to bring everyone, so that we have a sustainable and an adaptive integration, so that we take this resolve. And it's not that in low and middle income countries we can't eradicate the disease, only developed countries can do. We have felicitated those heroes who showed us that by simple ways we can progress. So we have a lot to progress. We are standing still far away from the goal. So year by year, day by day, we all shall meet and make it this cooperative program. And finally, we take. So I would like to thank the ISCCP Society, and the President, Dr. Leela Digumati, for having this session. Thank you, ma'am. Looking forward. Also, not the least, I would like you to also, all the presenters,
This ISCCP website is in a upgrade stage, and we are looking forward. But this ISCCP has a public forum which is available 24/7 and 365 days a year. So I would like your permissions that if this materials could be shared on the ISCCP website, that would reach out to the far masses. And I would like also you to keep looking at the ISCCP website for the blogs, for the videos. And if those who are not members, kindly do take membership so you can avail, so that at the end of year at 2030, we might not need this webinar to say that we might be saying, okay, we have reached an elimination. Chalo, next go to endometrial or ovarian cancer. Thank you, ma'am. Yeah, a special thanks to Dr. Pinaka for taking out those wonderful PPTs for the felicitation. Thank you, Dr. Pinaka, for doing it for us. Thank you so much. Yeah, thank you, everybody. Thank you, whoever has joined and stayed till the end. Thank you. Thank you. On behalf of Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd, I'd like to take this opportunity and thank everybody for being here today. Especially the good work that is being done through such esteemed faculty that we had today with us, and all the attendees as well. Thank you all very much, and do join us again for our ongoing monthly AOGD PG forum, which is now on AUB in reproductive age. Thank you, Dr. very much. Deepika. Thank you.